Hello everyone and welcome to Pendulum Edu. And in this session, we are here to discuss an article with you for vocabulary base. Let's begin with the article. The article that we've taken for you reads as Digging Deeper on GST Compensation. Recently जो डिस्कशन GST पर चल रहा है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आज इस आर्टिकल में और इसी से रिलेटेड जो वोकैबुलरी आपको मिलेगी बेसिकली जो वोकैबुलरी होगी वो जनरली इकोनॉमिक टर्म्स पर बेस्ड होगी. ये कैसे हेल्पफुल होगी अगर आपका कोई आरसी या कोई क्लोज पैसेज या पैराजम्बल क्वेश्चन सेट ऐसा आता है जो कि इकोनॉमी बेस्ड है, then it will help you a lot to understand it because you would know a lot many new vocabulary words from this article. So let's begin. Digging deeper. Now digging here is used as a verb which means to excavate. Excavate कहते हैं ना कि कोई चीज को खोद के बाहर निकालना. तो आप डिग डीपर कर रहे हो मतलब आप बहुत अंदर तक किसी चीज के उनको खोद रहे हो, उधर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन. तो एक्सकवेट करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, डिग मतलब एक्सट्रैक्ट करना जिसे हम कहते हैं खुदाई करना, राइट. सो इट इज टू एक्सकवेट. सो वी आर डिगिंग डीपर ऑन व्हाट. हम जीएसटी के जो कॉम्पनसेशन का जो डिस्कशन है या जो इंफॉर्मेशन है वो और ग्रैब करने की बात कर रहे हैं. With GST collections set to shrink, the center must find new ways to compensate states. वो कहते हैं जो GST collections are, they are now trying, they are set, they are about to shrink. Shrink is a word which means to lessen, to go down. Okay, or you can say to contract. Like our shirts or our clothes shrink, right? So the same way, the collection, I would say the collection or the amount has shrunken. Okay, so which this means if I just quoted Hindi मतलब छोटा हो जाना, okay, या कम हो जाना. So they are saying that center should look for alternatives and should come up with some new ways to compensate states. Now it further says 4 months into financial year 2020-21, the center has finally managed to pay states the compensation due to them for the previous year under the GST regime. Now regime is a noun used here which means it is some sort of, हिंदी में कहते हैं ना व्यवस्था, या जो एक शासन होता है, जो एक आप चीज जो एक सेट पैटर्न जो आप फॉलो करते हो. So it is kind of a set pattern of rules that is followed. All right. So this may come as a breather for states seeking to finance efforts to ramp up public healthcare capacity and contain COVID-19's detrimental effects on vulnerable sections. अब देखिए एक ही सेंटेंस में मैंने 4 वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं and we'll get to know the meaning of these words. कहते the moment we're talking about this particular thing that जो compensation 4 months जो ड्यू था previous year का वो सेंटर ने मैनेज कर दिया और स्टेट्स को पे कर दिया है. तो ये जो पॉइंट है ये कैसा है, इट हैज कम एज अ ब्रीदर फॉर स्टेट्स. उनको एक तरीके से समय मिल गया, मोहलत मिल गई, उनके पास जो पैसा आगे से अभी तक की देवर नॉट मेजर अर्निंग्स. एवरी स्टेट, एवरी nation, every individual I must say is struggling, is juggling, right? So they say that it has come as a breather. ये एक तरीके से हमारे लिए एक ऐसा एक पॉइंट आ गया जहाँ पर हम रुक के थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में पहुंच गए हैं. ब्रीदर है वो, एक तरीके की मोहलत है हमारे लिए स्टेट्स के लिए जो कि अभी तक फाइनेंस एफर्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. They were seeking to finance efforts. They were seeking to finance efforts. वो क्या कर रहे थे कि जो भी see कोविड-19 से फाइट करने के लिए एवरीवन इज मेकिंग मल्टीपल एफर्ट्स. तो जो एफर्ट्स वो कर रहे थे इट नीड्स और इट नीडेड फंडिंग, इट नीडेड मनी. सो दे हैव बीन मेकिंग कांस्टेंट एफर्ट्स to finance the efforts to ramp up public healthcare capacity. Ramp up means to increase public healthcare. This is a phrasal verb and breather is a noun, as I said. Ramp up is a phrase which means to increase, बढ़ना.
या आप कह सकते हो बढ़ाना, या वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी। एंड कोविड-19 का जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कंटेन इट, इट इज राइट हियर, एंड कंटेन कोविड-19 detrimental. Detrimental is an adjective which means harmful, हानिकारक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स इजिली अफेक्टेड, जो आसानी से, जिन पर आप हमला कर सकते हो या आसानी से जो चीज खराब हो सकती है, दैट इज वल्नरेबल। ओके, so it says the last installment of 13,806 crore for March 2020 was paid out recently, taking the total payments for the year to 1,65,302 crore. To refresh, states were guaranteed compensation from the center for the first 5 years of the new indirect tax regime introduced in July 2017. For the revenues they lost after the shift from the earlier system where states had the power to levy some indirect taxes on economic activities. Levy, लागू करना। लेवी का मतलब क्या होता है? कोई चीज लागू करना। जनरली अगर हम टैक्स की बात करें तो वी आर इम्पोजिंग टैक्स। हम क्या करें? टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। सो लेवी हियर इज यूज्ड एज अ वर्ब. So they are levying some indirect taxes on economic activity. This compensation assumed a 14% annual growth rate in a state's revenue, with 2015-16 as the base year, and was to be paid out from a compensation cess levied on. Compensation cess, ये देखो टैक्स के ऊपर भी जो टैक्स लगता है, that is it. So compensation cess, सेस को हम हिंदी में कहते हैं उपकर। जैसे टैक्स को हम कर कहते हैं, तो सेस क्या होता है? उपकर। दिस इज नाउन, इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स ओनली। सेस इज ऑल्सो अ टैक्स, बट इसको हम हिंदी में उपकर कहते हैं क्योंकि टैक्स के ऊपर भी जो चीज लगती है उसको हम सेस। सो लेवीड ऑन टॉप ऑफ स्पेसिफाइड जीएसटी रेट ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स। तो जो आप जीएसटी रेट, जो स्पेसिफिक जीएसटी रेट है लग्जरी गुड्स पर, सिन गुड्स पर, उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज एड ऑन किया जाता है, दैट इज कॉम्पेंसेशन सेस। ओके, सो दिस हैज बीन स्टेटेड कि ऐसा ये भी पे आउट हुआ है, दिस कॉम्पेंसेशन सेस की जो हम बात कर रहे हैं। फर्दर इट सेज with growth down over the previous fiscal year, even before the pandemic waylaid the economy. Waylaid यहाँ पर क्या मतलब है? देखो, जनरली waylaid is a past form for waylay. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो तो क्या कहा जा रहा है? With growth down over the previous fiscal year, even before the pandemic. अगर हम पैंडेमिक के पहले की, if we talk about the time before pandemic, it says even before the pandemic waylaid the economy. The moment I say, okay, I'll have to just underline this also, waylaid the economy. Before the time when pandemic hit the economy, or pandemic hit the economy. Here, waylay is used as a verb first of all, and this is the past form verb. As I said, the present form is waylay. This means to wait and sustain, okay, for the time being. तो पैंडेमिक ने इकोनॉमी को जब तक हिट किया, उस समय तक जो टाइम पीरियड था, सस्टेनमेंट का जो टाइम था, the assumptions of the not too distant past are beginning to hurt. Now this is a cause of worry, this is the point of worry now, because it is the assumptions of the not too distant past. Not too distant मतलब जो ज़्यादा दूर नहीं है, not too far past are beginning to hurt. Whatever assumptions, whatever thoughts, जो कहते हैं ना, धारणाएं बनाई गई थी, जो पहले सोचा गया था, जो अज्यूम किया गया था कि ऐसा हो सकता है, that things have started to hurt people, because वैसा का वैसा हो रहा है। देखो, जो ग्रोथ रेट है वो वैसे ही नहीं चला गया। अगर आप प्रीवियस फिस्कल ईयर से बात करो, चाहे हम पैंडेमिक के पहले की बात करें,
पैंडेमिक तो इन्हें हिट किया इकोनॉमी के बाद में, बट बिफोर प्रायर टू दैट ऑल्सो हमारा ग्रोथ रेट बहुत नीचे जा चुका था अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें. It further says compensation cess under GST last year was almost 70,000 crore, less than the payments due to states. Now see कितना बड़ा amount है, और अगर इतना amount से हम पीछे चल रहे हैं, so this is definitely a cause of worry, right? It was almost 70,000 crore less if you consider the payments that were due to states at that time. It further says this gap is likely to enlarge further this year. Enlarge, the verb here means to increase, to spread, okay, बढ़ना. With expected economic contraction denting GST collections as well. Compensation cess inflows could shrink even more with people curbing discretionary spending on luxury goods. When I say curbing, it is a verb used here, and curb is a verb, ing form use किया गया है curb का, but curb is a verb which means to manage, to restrain. Okay, so people are curbing discretionary spending, discretionary which is not necessary, unnecessary. So discretionary is used as here as an adjective. Okay, so discretionary spending on luxury goods in order to conserve capital or stay afloat in the pandemic hit economy. So when I was talking about stay afloat, here I meant stay afloat is to stay up. Okay, manage करना. Pandemic का जो time है, the time that we are going through, the challenges that everyone is facing in this moment. So if you want to stay afloat in this pandemic hit economy, a little over half of the shortfall in last year's cess kitty has been plugged by tapping cess balances, tapping, monitoring or controlling. मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, किसी चीज को व्यवस्थित करके. Okay, from the first 2 years of GST implementation, if you talk about the GST implementation और initial 2 years का बात करें, then the shortfall जो हुआ है last year में, उस चीज को कैसे maintain किया, उस चीज को maintain किया by controlling and managing जो last 2 years का जो balance था, cess balance, उसमें से first 2 years का, sorry. The rest has been conjured up from the Consolidated Fund of India by debiting integrated GST funds that were lying with the center. So they have conjured up means they have actually clubbed it up. Conjured up means to club it up. Like generally it is often by magic. जादू से कोई चीज हो जाना. It is it's something that comes out with magic. Okay. So conjure up. IGST is levied on interstate supply of goods and services, and some of this levy collected in 2017-18, the first year of GST when systems were still a tad ad hoc. Ad hoc is an adverb, and ad hoc means when necessary. जब किसी चीज का जरूरत हो तब, जैसी जरूरत हो, like you can say at that moment. And tad is also an adverb here. Tad means to a great extent or to some extent. Tad means to some extent. कहते हैं ना बहुत हद तक, बहुत हद तक. That is to some extent. So tad ad hoc, which is to an extent. आप कहोगे कि वो ad hoc था. At present also जो हमने first year का जो GST था, जो हम 2017-18 की बात कर रहे हैं, और हमने उस इंटरस्टेट सप्लाई जब किया तो IGST को लेवी कर दिया था, राइट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम. सो दे आर सेइंग दैट दिस इज अ टैड एड हॉक. ऐसा तभी होता है जब एकदम अत्यंत ज़रूरत पड़ती है या सिचुएशन वैसी होती है. ऐसा नहीं कि हम हर टाइम ऐसा कर देते हैं. सो फर्दर इट सेज, having thus drawn on these unintended contingent reserves, contingent is an adjective, okay,
कंटिंजेंट का मतलब, कंटिंजेंट इज when required, आकस्मिक, राइट। कोई चीज जो कंटिंजेंट होती है, जैसे उसको हम संभाल के रखते हैं, एक तरह से वो हमारा सेफ जोन में रखा होता है पैसा, या जो सेफ जोन में हम अपना सामान रखते हैं कि भाई ऐसे एकदम इमरजेंसी के मोमेंट पे अगर हमें, जैसे कंटिंजेंसी फंड होता है, राइट। So unintended contingent reserves paying compensation to states this year is going to be even more daunting for the center. कह रहे हैं वो बहुत कठिन होगा. It will be, daunting is used as an adjective here. It will be more daunting. It will be more difficult for the center. At the last GST Council meeting in June, Finance Minister Nirmala Sitharaman had said the council would convene again, meet again. Verb. Convene is a verb which means to meet. Okay? To gather at a place. किसी को एक साथ बुलाना और वहाँ पे मीटिंग करना. So they will convene again in July just to discuss the possible alternatives to deal with this particular conundrum. Conundrum is a noun which means this kind of riddle. ये जो confusion है, हिंदी में कहते हैं conundrum को हम पहेली. ये जो पहेली है इसको सुलझाने के लिए they will convene again, वो मिलेंगे, they will look for alternatives. What all possible alternatives are there so that they can manage and deal with it. The chief solution officials have been fleshing out is for the center to raise special loans against future GST cess. They're saying the chief solution officials, जो कि officials हैं, जो कि solution निकाल रहे हैं, they have been fleshing out. They have been fleshing out. Flesh out. Flesh out here is a phrase which is used. It's a phrase. It is used to mean to extract एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालना. जो छुपी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो छुपा हुआ डिटेल्स है, उनको बाहर निकालना. एंड दिस चीफ सॉल्यूशन ऑफिशियल्स हैव बीन डूइंग फॉर द सेंटर टू रेज स्पेशल लोन्स अगेंस्ट फ्यूचर जीएसटी सेस accruals in order. Accruals means accumulation. Accrual is a noun which means accumulation. I am writing it down here. Accrual means accumulation, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना. In order to help meet its compensation promise to states. There is no sign of that meeting being scheduled yet, that the pandemic's economic havoc, havoc is तबाही, हिंदी में हम इसे तबाही कहते हैं, right? कहते हैं ना a major disaster, that is havoc, it's a noun. So abhi what kind of havoc is it? It is an economic havoc that the country is facing because of the pandemic and has thrown up multiple challenges for North Block Mandarins is understandable. Mandarin is a noun and Mandarin is a bureaucrat or you can say a top official. एक ऊंचे दर का जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो ऊंचे स्तर पर है, उसको हम मैंडरिन कहते हैं. तो वो उन सब के लिए जो मल्टीपल चैलेंजेस फेंक दिए हैं सबके लिए, राइट. But with a third of the fiscal year almost over, it would help the center and the states to battle the virus more effectively if they had more certainty and clarity on the cash at their disposal. They are saying that if in case, they're saying that the author says that if the center has more clarity about how to utilize the capital that it has or utilize the amount of the cash they have at the disposal, which means in their hands, toward the amount that they can use, if they know how wisely they have to apply it, where to use it and where not to, then they can manage and battle the virus more effectively and in a more efficient way. That would help them a lot to challenge or to overcome these challenges that we've been facing, that the entire country has been facing for this long. So this is what the author had to say for the entire situation that the country has, for the GST regime or the cess regime that we've been discussing in the entire article for today. So these were the words learner for today. This was the article that we had for today to discuss with you. I want you to go through more articles related to this topic, that is the GST compensation cess that we've been discussing.
to extract more information, to extract more words that you can learn based on this kind of a topic. And I would come up with something else with you soon. Till then, keep learning and growing. And I would take a word of the day for you people for today. That will be havoc, which is a noun and it means a major disaster, a major disaster, a big disaster, something that is so huge, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तबाही, right? So I want you to frame sentences and comment that down below and let us know your own sentences. Keep learning and growing, learners, and do not forget to subscribe the channel for more such sessions. Thank you so much.